Hello student, this is Shivam Mitra. Now we are going to continue some more topics. In the last few lectures we have seen about origin, PGP, straight line, conic sections, circle, hyperbola, parabola, ellipse and rest of the topics. Now we will see some more topics regarding class 11 syllabus and the topics such as that is very important topic, and we are going to start a new chapter that is called limit and derivative. We are going to start chapter limit and derivative. That's a very important chapter of the class 11 portion. Or you can say the most important chapter of the class 11. The most important chapter of mathematics of class 11. We are going to start. Mr. K.K. Bhatt. Mr. K.K. Bhatt, please be in class. Limit and derivative. Class 11. Now it's a very important chapter. So I want that you should pay attention and listen it very carefully and try to understand all the concepts, and if you have any kind of queries and doubts, please do comment or let me know through any way so that I may clear it again and again, and I will make sure that all the topics must be clear to you. But then also if you are having any doubt, please do comment and share your doubt with me so that I can sort it out. Limit. It's a very important chapter as well as easy also. What we have studied, let me remind you in the class 10 syllabus, something you have studied which you will use here also. Such as you have studied about fx. Let suppose fx is a particular function, fx is 2x plus 3. Let it be 2x plus 3. Okay? And someone is asking to you to find the value that f of 2. Find the value of 2. Then what you will do? You will just put this 2 in the function and you will get the result. What you will do? 2 into 2 plus 3. And what you will have? 2 to the 4 plus 3 is 7. The result will be 7. So what did we do? We just kept on solving that function was there 2x plus 3 and we need to find f of 2 means we have to put 2 at the place of variable. We have to put 2 at the place of variable and we kept that and we got a result. Similarly, if I am having another function f of x equals to x square plus 5x minus 3, then also if someone is asking to you to find a particular value, such as asking that find f of minus 1 upon 2, then also you can solve it and get the result. What you will do? You will just use this value minus 1 upon 2 whole square plus 5 into minus 1 upon 2 minus 3. And on solving whatever the result you get, that will be the required answer. On solving whatever the result you will get, that will be the required answer, and that will be sufficient to finish this question. And this we have done in class 9th and 10th syllabus. Now the same pattern or the same thing, we will just start the limit. What we will do? Suppose it is written like this, the same question. A particular function is there, or a limit is there, limit x tends to 2 and fx. Limit x tends to 2 and fx is there, and fx, what does it mean? This is the fx. Again, same fx I am using, and it is given limit x tends to 2 fx. Means you have to put this 2 again in this function and get the result. You have to put this 2 again in this function and get this result. Until and unless the function is not defined at particular value. Until and unless the function, whatever we are using or whatever we are having, is not defined at that particular value. If it is defined at that particular value, we will just simply put the value and get the required result. Now how will we understand that? Suppose if someone is asking limit x tends to 2, find the value of x. And we have the function like this, then what we will do? 2 into 2 plus 3. Again we will have the same result, 7.
and the same procedure will be followed here also. If someone is asking limit x tends to minus 1 upon 2, then also the same procedure will be followed until and unless the function is not defined. If the function is defined at this particular value, means you can keep the value, put the value directly in the required equation, in the given equation, and get your result. Okay. Now what does this mean? That until and unless the function is not defined, function is defined to you. Suppose I am writing another function. Let's see. If someone is writing limit x tends to 5 and it is given to you x square minus 25, what you will do? You will just keep the value. It is given to you limit x tends to 5 and function is there x square minus 25. What you will do? You will put the value 5 over here and 5 square minus means 25 minus 25. That will be the result 0 or whatsoever. That doesn't say anything. But if this function is written like this, that limit x square minus 25 upon x minus 5 and limit x tends to 5. Now it's a big trouble. X tends to 5 means 5 minus 5 will become 0. 5 minus 5 becomes 0, that means the denominator portion will become 0. The denominator portion of a particular function becomes 0, that means that the function is not defined. That particular function is not defined at this particular point. Because denominator becomes 0 means 1 upon 0 case occurs. Or 1 upon 0 case occurs means not defined portion. Is that? Not defined portion, we do not know what the result would be. So it is a not defined portion. So until and unless function is defined to you, you cannot keep the value of limit to the function. Until and unless function is not defined to you, you cannot keep the value of limit in the function. You need to first define the function, and after defining the function, then only you can keep the value. So let me explain. Limit x tends to 5, we will just manipulate this equation or formulate it in our way so that we can put the value and simplify it. So what we will do, the above equation can be written as x plus 5 and x minus 5. With a square minus b square, a plus b and a minus b upon x minus 5, and this portion will be cancelled out with this portion. X minus 5 will be cancelled out with x minus 5, and now we will have x plus 5. So limit x tends to 5, we will have x plus 5, and this will give the required result 5 plus 5. Now the function was defined, so we can keep the value, and 5 plus 5 means 10. We got a result 5 plus 5 equal to 10. So what we did, in the question, function was not defined at this particular limit, so we made it suitable format, in a suitable format, so that we can keep the limit value inside that, and after putting it, simplifying it, we kept the limit over here there, and we got a particular result. That is the required answer of our question. So once again I will explain. एक बात समझ लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है पूरे क्लास 11 का, ठीक? खूब मन से सीखिए और जहां डाउट आए वहां आप एनीवे क्वेरी को फॉरवर्ड कीजिए ताकि उसको क्लियर किया जा सके, ठीक? fx कोई फंक्शन दिया था, सपोज कीजिए, शुरू से बताता हूं फिर से। fx कोई फंक्शन दिया था 2x + 3, ठीक? आपने 10th में सीखा है फंक्शन f of 2 का मान निकालना, तो क्या किया आपने, डायरेक्टली 2 पुट कर दिया और 2 × 2 + 3 हो गया, रिजल्ट आ गया 7। ये 10th 9th में किया। एक और क्वेश्चन में दिया fx = x² + 5x - 3, और फिर से मान पुट किया, f of -1/2 का मान निकालें। फिर वैल्यू पुट करने पे आपने पुट किया और जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक? लिमिट भी सेम तरीके से चलता है, ना? लिमिट को भी सेम पैटर्न करते हैं। कैसे करते हैं? लिमिट fx था x → 2 लिखा हो, इसी पार्ट को लिखा हो लिमिट fx x → 2 या लिमिट x → 2 fx, ठीक? अगर फंक्शन डिफाइन था, अगर फंक्शन डिफाइन है, डिफाइन होना और नॉट डिफाइन होने का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि अगर फंक्शन में डिनोमिनेटर पोर्शन 0 नहीं हो रहा है, फंक्शन का डिनोमिनेटर पोर्शन 0 नहीं बन रहा है, ठीक? तो फंक्शन एक तरह से डिफाइन, फंक्शन क्या है? डिफाइन।
डिनोमिनेटर पोर्शन 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर डिनोमिनेटर तो इसमें है ही नहीं फिर आसानी से लिमिट पुट कर सकते हैं 2 into 2 plus 3 हो गया और ये सॉल्व करने में मिल जाएगा 7। क्लियर है? एक और बात करें, इसमें ही बात करें, इसको कैसे लिखाया था? इसको भी सिंपल लिखाया था, लिमिट x टेंड्स टू -1/2 और fx, लिमिट x टेंड्स टू -1/2 एंड fx। सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर पोर्शन नहीं है, डिनोमिनेटर पोर्शन नहीं है मतलब फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन डिफाइन है तो लिमिट की वैल्यू आसानी से निकाल पाएंगे। सिंपल है। इधर बात करें, एक फंक्शन और लिया मैंने, लिमिट x टेंड्स टू 5 x स्क्वायर माइनस 25, x स्क्वायर माइनस 25 को सिंप्लीफाई आप करेंगे तो क्या मिलेगा? डायरेक्ट फंक्शन का डिनोमिनेटर पार्ट नहीं है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो 5 पुट कर लिए तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 25 0 हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ रहा 0 होने से, क्योंकि ये न्यूमरेटर पोर्शन है या एक सिंगल फंक्शन है ना। बट इसी फंक्शन को थोड़ा चेंज किया मैंने, x स्क्वायर माइनस 25 और x माइनस 5। अभी क्या है, डिनोमिनेटर में x माइनस 5, डिनोमिनेटर में x माइनस 5 आ गया। अब वैल्यू पुट करता मैं तो 5 माइनस 5 0, डिनोमिनेटर क्या होता है 0 हो जाता, डिनोमिनेटर क्या होता है 0 हो जाता। ऊपर क्या बन रहा है इससे मतलब नहीं, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर क्या है 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए तो फंक्शन को पहले आप थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे उसको कि आपके अकॉर्डिंग वो बन पाए, फंक्शन डिफाइन हो पाए पहले कि डिनोमिनेटर पोर्शन या तो ना रहे या फिर वो 0 ना बने। ठीक, तो क्या किया, x स्क्वायर माइनस 25 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है, उसको ब्रेक की a प्लस b और a माइनस b में, नीचे वाले x माइनस 5 है इसको ब्रेक की x, ऐसे ही अभी x माइनस 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे और जैसे ही ये कैंसिल आउट हो जाएंगे फंक्शन बचेगा मेरा x प्लस 5, तो लिमिट x टेंड्स टू 5 x प्लस 5, वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस 5, कितना वैल्यू मिलेगा 10 मिल जाएगा। समझ में आया? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। वंस अगेन आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल। सपोज fx इक्वल्स टू sin cube x minus 1/2 whole cube sin x minus 1/2 and limit x tends to pi by 6, limit x tends to pi by 6, pi by 6 means pi means 180 degree, pi by 6 means 180 by 6 means 30 degree, and sin 30 means sin x, here it will become sin 30 and sin 30 value is 1/2, 1/2 minus 1/2, the function will become not defined. Function will be not defined if you are going to give this value directly. Denominator portion becomes 0 and that is a not defined portion, and that is a not defined portion, and to escape from this what we will do, we will just formulate the above equation, and how that will be done. Above you can see a cube minus, there it is, cube, a cube minus b cube formula. You can easily see sin cube x minus 1/2 whole cube, a cube minus b cube formula, and by using that formula we know it can be written as sin x minus 1/2 in a single bracket, and another bracket we have sin square x plus 1/2 square, and its minus means minus sin x into 1/2. So a minus b, a square plus b square minus ab, and upon sin x minus 1/2, sin x minus 1/2, and on solving this limit x tends to pi by 6. Now this portion will be eliminated, and after that this function doesn't have any denominator portion. Function do not have any denominator portion. You can easily put this limit x tends to pi by 6 in the function, and putting this
sin pi by 6 1 upon 2 whole square minus 1 upon 2 sin pi by 6 1 upon 4. You can easily solve this. 1 upon 4 and 1 upon 4 will be cancelled out, and here it will be 1 by 4 will remain out. So we get the required result as 1 by 4. We will have the required result as 1 by 4. फिर समझते हैं इसको. एक और फंक्शन लिखा मैंने आपके लिए. क्या लिखा? लिमिट x fx इक्वल टू sin क्यूब x माइनस 1 अपॉन 2 का होल. sin क्यूब x माइनस 1 अपॉन 2 का होल. ठीक. और डिनोमिनेटर में है sin x माइनस 1 अपॉन 2 sin x माइनस 1 अपॉन 2 और लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6 की वैल्यू निकालनी है. लिमिट पढ़ने का तरीका ध्यान रखेंगे. लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6 मतलब पाई बाय 6 से और टेंड कर रहा है. मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि लिमिट का बेसिकली यूज क्या होता है. अभी हम लोग सीख रहे हैं एप्लीकेशन. ठीक है. इसको यूज क्यों किया गया ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा. लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6. ठीक. तो sin x माइनस 1 अपॉन 2 था. फंक्शन डिफाइन कैसे होगा? ठीक. ये तो जैसे ही पाई बाय 6 आप पुट करते sin पाई बाय 6 बनता. sin पाई बाय 6 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 जीरो हो जाता डिनोमिनेटर. अब डिनोमिनेटर जीरो चाहिए नहीं, उसके लिए डिफाइन करना पड़ेगा. कैसे डिफाइन किया जाए? तो ऊपर a क्यूब माइनस b क्यूब को फॉर्मूला देगा. a क्यूब माइनस b क्यूब फॉर्मूला है a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab के फॉर्म में इसको तोड़ दीजिए. नीचे sin x माइनस 1 अपॉन 2 था, ये पोर्शन कैंसिल हो गया. जो बच गया वहां वैल्यू पुट कर दीजिए. तो 1 अपॉन 5 6 पुट करेंगे आप. पुट करेंगे क्या आ जाएगा? sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 sin पाई बाय 6. सिंप्लीफाई कर लें तो sin 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 ये 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर. ये दोनों पोर्शन कैंसिल आउट. ये बच गया आपका 1 अपॉन 4. सो 1 by 4 हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया. आई होप द above part whatever I got to you will be clear to you. If you have any doubt, any query, do comments, and till that keep on solving and start doing your exercises, simple questions you can touch or you can read these examples and try to get maximum from it. Till that, we will see in the next lecture. Now it's thank you.